हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब टॉपिक लॉजिक गेट्स। कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं एंड उनके क्या सर्किट सिंबल्स हैं, उनके क्या ट्रुथ टेबल्स हैं, उनके बारे में। तो पहला गेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डी, और इधर होगा इनपुट, यहाँ होगा आउटपुट। इनपुट ए और बी एज्यूम करते हैं हम, जिसका आउटपुट वाई है, तो वाई जो होगा वो होगा ए डॉट बी। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में देखते हैं कि ए और बी के किन किन इनपुट के लिए क्या क्या आउटपुट होगा। तो लेट अस एज्यूम कि ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, देन वाई विल बी ज़ीरो। इफ़ ए इज़ ज़ीरो, बी इज़ वन, then also y will be 0. If a is 1, b is 0, then also y will be 0. And if only a is 1, b is 1, then y will be 1. This is the truth table for AND gate. Now we will study about OR gate. OR gate का सर्किट सिंबल है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जहाँ पे इनपुट हम एज्यूम करते हैं ए बी एंड आउटपुट एज्यूम करते हैं वाई। तो वाई की इक्वेशन बनती है ए प्लस बी। यहाँ पे प्लस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है और ये मैथमेटिकल प्लस से डिफरेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में जानते हैं। ए बी वाई, जहाँ पे वैरायटी ऑफ इनपुट्स के लिए हम वाई की वैल्यू देखेंगे। तो जब ए ज़ीरो बी ज़ीरो होगा तो वाई भी ज़ीरो होगा। जब ए ज़ीरो बी वन होगा तो वाई वन होगा। जब ए वन बी ज़ीरो होगा तो वाई वन होगा। जब ए वन बी वन होगा तो वाई वन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीन कॉम्बिनेशंस के लिए जो y की वैल्यू है वो 1 है, यानी कि ट्रू है, और एक कॉम्बिनेशन के y की वैल्यू फॉल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट का सर्किट सिंबल है इस तरह से, जहाँ पे केवल एक इनपुट एज्यूम करते हैं ए और आउटपुट एज्यूम करते हैं वाई। वाई की जो इक्वेशन होगी ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि विच एवर इनपुट इज़ कमिंग एट इट्स इनपुट टर्मिनल द आउटपुट विल बी अपोजिट लॉजिक। सो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, जहाँ पे ए की वैल्यू अगर ज़ीरो है यानी कि फॉल्स है तो वाई की वैल्यू 1 होगी, यानी ट्रू होगी। ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। अब हम पढ़ेंगे XOR गेट के बारे में। XOR गेट जिसका सर्किट सिंबल होता है 2 इनपुट XOR गेट के लिए कुछ इस तरह से, जिसमें अगर A और B इनपुट हैं, Y आउटपुट है, तो Y को हम लिखते हैं A XOR B। ये जो प्लस के ऊपर सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स XOR। A इज XORing विथ B। इसकी ट्रुथ टेबल देख लें हम, और इसको फर्दर एक्सप्लेनेटरी करके देखें तो हम इस पाएंगे कि इट इज़ नथिंग बट ए बी बार प्लस ए बार बी। ये इसकी एक इक्वेशन है। अब हम वेरियस कॉम्बिनेशंस के लिए इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है तो अब हम इसमें रख के देखते हैं कि इफ़ ए इज़ ज़ीरो तो
b is 0, b का complement is 1, 0 into 1 is 0. We have seen it in AND gate logic. And a का complement is 1, 0 का complement is 1 and b itself is 0. तो इसका जो एंडिंग होगा वो आएगा 0, और 0 प्लस 0 इज़ नथिंग बट 0. 0 और 0 का XOR हम पाएंगे कि ये 0 आता है. इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि a 0 है, b 1 है, तो क्या वैल्यू आ रही है, तो हम इसको इक्वेशन में रख के देखेंगे. a की जगह पे हमने 0 रखा, b की जगह पे 1 रखा एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो इट विल कम एज 0. 0 और 0 का एंडिंग 0 होगा, हम जानते हैं. प्लस a का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे 0 का कॉम्प्लीमेंट विल कम एज 1 एंड b itself is 1, इट विल कम एज 1. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 प्लस 1 यानी कि 0 और 1 का और 0 और 1 का और लॉजिक इज कमिंग एज 1. द a प्लस b, a XORing b will come as 1 for 0 and 1. Similarly, it will be the case of 1, 0 also, where the output will come as 1, and for 1 and 1 it is nothing but same as 0 and 0, it will come as 0. आप इसे इस इक्वेशन में रख के प्रूव कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे XNOR गेट के बारे में. XNOR gate is nothing but XOR and NOT at the output of it. So let us assume that input is A, B for 2 input XNOR gate and output is Y. So the equation is written as A, B, where this symbol represents XNOR. And if you further elaborate it, then you will find that it is coming as AB plus A complement B complement. It is nothing but A XOR B का complement. So we'll see the truth table. The combination of 0 0 0 1 1 0 and 1 1. For 0 0 we already know that the XOR logic was coming as 0, XOR logic. Then XNOR logic will be automatically 1 because it is nothing but the complement of it. So similarly we have seen that 0 1 XOR output was 1, for 1 0 it was 1 and for 1 1 it was 0. So the XNOR will be just opposite of this, the complement of this. So for this it will be 0, for this it will be 0, and for this it will be 1. Alternatively you can put these values in this equation and you will find the same answer. एक और गेट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है NAND गेट. तो आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट AND गेट एंड ए इन्वर्टर एट द आउटपुट ऑफ इट. So whatever was coming in the AND logic, it is NAND is giving the complement of it. So accordingly the truth table will be for AB the AND was, for 0 0 the AND was 0, but here the complement is there, so it will come as 1. For 0 1 it was coming out as 0, but due to complement it will come as 1 again.
For 1 0 it will be 1, and for 1 1 the AND logic was giving the output as 0. AND logic was giving as the output as 1, but NAND will give the logic as 0. One more gate is there, which is NOR gate. It is nothing but the OR gate and an inverter at the output of it. So the equation will be nothing but A plus B, but a complement due to this inverter will be there, and we'll see the truth table. So the truth table is coming out as, for OR logic it was coming out as 0. You can write it here, OR logic and NOR logic. The OR logic, the output was coming as 0 for this 1, for this 1, for this 1, but for NOR logic it will come out as 1 0 0 0. You can see just the complement of the OR logic, the NOR is giving the output. Now we can find out the relation between NAND and NOR. Since the NAND is nothing but the AND logic and a complement at the output of it, and NOR is nothing but the OR logic and a complement at the output of it. So these both can be represented in the form of one and other. We will see how. For that we have to know De Morgan's law. De Morgan's law says that A plus B complement is nothing but A complement dot B complement, and A dot B का whole complement is nothing but A complement or B complement. We should be having practice of saying this plus as OR and this dot as AND, because these are the logic symbols, not the mathematical functions. We have to remember this. So here in the case of NAND logic, we have seen that NAND is nothing but A dot B whole complement. So it can be written as A complement B complement, and the NOR gate, the output of this was A or B and the whole complement of it. So according to De Morgan's law, we can represent it as A complement and B complement. So we have seen NAND and NOR according to De Morgan's law, and this is very true that NAND and NOR are called universal gates. Universal gates. Why they are called universal gates? Because any gate can be realized by using NAND and NOR logic. Any gates which is there in the existence can be realized using NAND and NOR. That is why they are called as universal gate. In the coming videos, we will see about SOP, POS and universal gates. You must have heard about SOP, sum of products, and this is called as products of sum. And your universal gates, I just told you about NAND and NOR. So we will realize any gate using NAND and NOR. We will practice about them.